Hello students, welcome all in your dream tuition as this is the first video lecture of your standard 8. So students, at the just beginning I want to tell you something. See students, first of all it is very important as a student that you should enjoy your learning. Yes student, मैं क्या कह रही हूँ, आपको आपकी लर्निंग को एंजॉय करना होगा एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज ए स्टूडेंट. आप बोलोगे टीचर लर्निंग कैसे एंजॉय करते हैं? तो सी स्टूडेंट, जब अंडरस्टैंडिंग होगी देन डेफिनेटली आपको एंजॉयमेंट आएगा. ठीक, जब भी कोई काम आपको समझ में आता है, एनीथिंग जब आप समझते हो तो फिर उसको करने में आपको बहुत मजा आता है ना. व्हेन यू अंडरस्टैंड देन डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करते हैं. इट इज सेम इन दिस एजुकेशन ऑल्सो. See student, it is very very important that you should enjoy your learning. तो अब लर्निंग एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना होगा? See, only you understand whatever is you learning, whatever you do, first understand कि आप क्या कर रहे हो, समझने की कोशिश करो. It is very important. Now आप समझेंगे कैसे, समझने के लिए क्या करना होगा? तो फिर सीरियस हो जाना है? नो स्टूडेंट, सीरियस तो होना ही नहीं है. सीरियस हो जाओगे तो और सीरियस कंडीशन हो जाएगी, है ना. तो सीरियस नहीं होना है, सिर्फ सिंसियर होना है. यू हैव टू बी अ सिंसियर स्टूडेंट. सिंपल. फॉलो सिंसियरिटी इन योर एजुकेशन. डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग भी आएगा. वंस अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आप आपकी स्टडीज को, आपकी लर्निंग को एंजॉय भी कर पाओगे. दैट क्लियर? सो बी अ सिंसियर स्टूडेंट. सिंसियर स्टूडेंट मीन्स व्हाट? मीन्स गिव योर क्वालिटी टाइम टू योर एजुकेशन. जो भी आप कर रहे हो, वॉट एवर, इफ यू आर वॉचिंग अ वीडियो, इफ यू आर डूइंग सम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम और इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग, बट डू विथ सिंसियरिटी. यू योर क्वालिटी टाइम टू योर एजुकेशन. ऐसे नहीं कि आप घंटों से बैठ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बट आप उसमें से कुछ ले नहीं रहे हो. नॉट क्वांटिटी, quality time. Okay, short, simple. See, as it is your dream tuition, it's just not a tuition, it's your dream tuition. Whenever you feel relax, आपका mind set होगा, relax होगे, then energy होगी, then on the video, see all the lectures are covered in the different short videos. So you have to watch each and every video. See with sincerity. सिर्फ ऐसे नहीं कि वीडियो ऑन है और आप कहीं और ऑन, नो, ऐसे नहीं करना है. Watch the video carefully one time. अगर आपने समझ लिया इट इज वेरी गुड. अगर फिर भी सम पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, देन गो बैक टू वन मोर टाइम टू दैट वीडियो, रिवाइंड इट एंड अगेन वॉच वन मोर टाइम. इफ वॉचिंग, वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली, एंड वंस यू वॉच एंड लिसन तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. सिंसियरिटी से आप देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. वंस यू अंडरस्टैंड देन आफ्टर वॉचिंग वीडियो pause the video and solve whatever is the problem. Okay, all practice said. सिर्फ just watching नहीं करना है स्टूडेंट. Watching, understanding and then write down all the exercise practice said in your notebook. Solve by yourself. Try to solve by yourself. Watch in the video, listen in the video and solve in your notebook. Okay student, so best of luck. This is the first video lecture. All lectures are recorded in the video form. Okay, so go through each and every video lecture. Okay, now so without wasting time, come to our main syllabus of standard 8. See student, as we know there are two parts, part 1, part 2. Part 1 for what? First semester examination and part 2 is for second semester examination. In part 1 there are total 9 chapters. Okay, and one miscellaneous exercise. Okay, so in this first semester we have to cover all these 9 chapters as well as miscellaneous exercise 1. Okay, now in that the first lesson is of chapter number 1, rational number and irrational number. So now let's start with this lesson. Today we are going to start our first chapter, rational and irrational number. ओके स्टूडेंट, तो पहले ही आपको मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला है. ओके, वॉच केयरफुली, सिंसियरली, बी अ सिंसियर स्टूडेंट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो एज अवर नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर. नाउ स्टूडेंट, अगेन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल लेसन, फर्स्ट
what we are going to study in this lesson. हम इस लेसन में क्या स्टडी करने वाले हैं? Which are the points and which are the terms we are going to study in this lesson? तो first of all, as the name, हम देखेंगे what are rational number. Okay, definition. What are rational number? And again, how to represent or how to show a rational number on a number line. नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे शो करना है. ओके, देन नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर. कंपैरिजन, सी हु इज बिगर, हु इज स्मॉलर और बोथ आर इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल. तो वी हैव टू कंपेयर द रैशनल नंबर. हम तो नॉर्मल नंबर का कंपैरिजन करते हैं, बट हाउ टू कंपेयर अ रैशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रैशनल नंबर. डेसिमल पॉइंट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रैशनल नंबर. एंड नेक्स्ट, एज द नेम, सेकेंड चार्ट, इरैशनल नंबर. व्हाट आर, सी बहुत थोड़ा आपको टॉपिक है यहाँ पे. इरैशनल नंबर, व्हाट इज इरैशनल नंबर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इरैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. इसका डेसिमल एक्सपांशन आपको नहीं है. ओनली what are irrational number and how to represent irrational number on a number line. This much. Okay, so these are the main subtopics we are going to study in this lesson. Is that clear all of you? सबको समझ में आ गया लेसन में हमको क्या सीखना है? Mainly what are rational numbers. Okay, ये सम पार्ट हमने 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके स्टूडेंट. Okay, now अब before rational number, first of all we all know numbers, है ना? numbers, see our life is always connected with numbers. क्योंकि डेली लाइफ में हम डेली जो हम यूज करते हैं, इन मेनी वे वी आर यूजिंग नंबर्स. चाहे वो आप टाइम से हो, मॉर्निंग में क्या टाइम हो रहा है, टाइम में क्लॉक नंबर फॉर्म में है. आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, आपको कुछ लेना है, बाय करना है, सेल करना है. सो ऑल वॉट एवर वी आर डूइंग, ऑल आर समवेयर कनेक्टेड टू द नंबर्स. हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं नंबर से कनेक्टेड होता है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो मोर अबाउट नंबर. तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको नंबर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए. सी हम तो नंबर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? नंबर 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर्स. ओके, नाउ ईच स्टैंडर्ड, जब आप बिगर स्टैंडर्ड में जा रहे हो, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. पहले आपको पता था कि 1, 2, 3 इतने ही नंबर्स होते हैं. देन फिर आपने 0 ऐड किया, फिर बाद में आपने इंटीजर्स के सम आर निगेटिव नंबर, सम आर पॉजिटिव नंबर, है ना? आपको 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स था. आपने सब समझ लिया है कि नंबर्स आर नॉट ओनली 1, 2, 3. 1, 2, 3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -1, -2, -3 दीज आर द निगेटिव इंटीजर्स. तो नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं. नाउ इन दिस स्टैंडर्ड अगेन और एक स्टेप आगे. सी ईच टाइम आपको एक स्टेप आगे जाना है. तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट रैशनल नंबर. ओके, नाउ सो जस्ट अगेन स्टार्ट टू रैशनल नंबर. जस्ट रिकॉल, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किन किन नंबर सिस्टम को देखा है. विच आर द नंबर सिस्टम वी हैव, or we have studied till now which number system. As we all know, very important or very famous, our favorite number system, counting numbers 1, 2, 3. Okay, अब तो हम इसको काउंटिंग कर देते हैं, लेकिन we know counting numbers in mathematic language they are called what? Natural numbers. See, number 1, 2, 3, 4 and so on. See, we can say what is the smallest natural number. Smallest natural number मतलब जहां से natural number start होते हैं, 1. What is the biggest natural number? Biggest natural number क्या होगा? We can't say. हम नहीं बता सकते. We can't find because numbers are infinite. Infinite means uncountable. हम इसको count नहीं कर सकते. So we can't tell which is the biggest. But we can say which is the smallest. So 1 is the smallest natural number. Natural numbers start with 1 and they are denoted by capital letter what? N for natural number.
और इसको आप काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, बट इन मैथमेटिक्स काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर. इज दैट क्लियर? एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. 1, 2, 3. All are positive. 1, 2, 3. See, only numbers no sign mean they are positive. A number which have no sign means always there is a plus sign. Okay? Now, second, see, यहाँ पे why we need, because जब आप इनका subtraction करते हो, when we subtract, addition करोगे तो natural numbers are enough. But when we subtract, suppose 2 minus 2, 3 minus 3, what is the answer? आप 3 में से 3 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 0. 1 minus 1, 0. But is 0 present in the natural number? 0 नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है? नो. नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. 0 is missing. So for that 0, another big number system, all are same. Only 0 is added. नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया है and that number system is called as whole number. What? तो सेकेंड, whole number. CWHOLE. Whole numbers. Denoted by capital W and they are start with 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Again in the same we can say which is the smallest number? 0. Which is the smallest whole number? 0. Which is the biggest whole number? We can't say. So what are the whole numbers? 0 and all natural numbers. See, 0 and all natural number. So using this, can we say student, हम कह सकते हैं all the natural numbers are whole number. जो natural है, because all natural इसमें present है. So all naturals are whole, but all wholes are not natural. All wholes. 0 is whole but not natural. 1 is whole natural. 2 whole natural. Means all natural numbers are included here. सबके सब natural number whole number में fit होते हैं. But all whole numbers not fit in the natural. क्योंकि 0 natural में नहीं आता है. Is that clear? Now, again these numbers are not enough. Why? See, 4 minus 3, 1. But what is 3 minus 4? 3 minus 4 means smaller number में से bigger number आप minus कर रहे हो. So we get the negative answer. We get a negative answer. But natural number, whole numbers all are positive. तो natural negative number कहाँ पे fit होगे? So another one system of number and it is contain these two. ये दोनों को मिलके again negative numbers. They are called as, yes, in the last year 7th standard में हमने देखा है integers. So third, integers. They are denoted by capital I. So what are integers? Both. 0 is middle. Now on right side of 0 all are positive and left side to the 0 all are negative. Again uncountable, uncountable. Always remember student, 0 कौन सा नंबर है? Is positive or negative? 0 is a positive number or negative number? 0 is neutral number. No positive, no negative. Always remember student, अब 0 को साइन नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव. 0 is neutral. Okay, now right side, पता है ना right side, and this is the left side. जहाँ से आप लिखते हो, राइटिंग करते हो, that is left side, and this is the right side. और जहाँ से आप राइटिंग स्टार्ट करते हो, this is the left side. So 0, the number which are left side are negative integers. Number on right side of 0 are positive integers. So all, see natural number भी यहाँ पे आते हैं, whole number भी यहाँ पे आते हैं. So every integer, every rational number is integer. Every whole number is integer. But integers are, every whole number is integer. Every natural number integer. But every integer is whole? No. Negative number whole में नहीं आते. Is that clear? Now, till now अब तक हमने ये देखा था. See, इसको अगर आपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो smallest number is natural number.
नाउ नेचुरल को इंक्लूड करके, नेचुरल में इंक्लूड हुआ है बिगर नंबर 0, सी 0 ऐड करेंगे तो इट बिकम होल नंबर. नाउ अगेन नेचुरल होल किस में आते हैं स्टूडेंट? इंटीजर्स. नाउ all are, again these integers all are covered and that is called our rational number. Rational numbers, very big collection, rational number. So come to our rational number. So which numbers are called rational number? See student, any number which can be written or which can be expressed in the form of m upon n. जिस नंबर को ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं m upon n. What is m and n? M and n belongs to I means integer. Means m and n क्या है? वो integers है. और पॉजिटिव भी हो गए, निगेटिव भी हो गए. बट ओनली वन कंडीशन, n शुड नॉट बी इक्वल टू 0. n, सी दिस इज द साइन ऑफ इक्वल, ऐसा मतलब नॉट इक्वल. n नॉट इक्वल टू 0. वेयर इज n? n डिनोमिनेटर में है. वी नो ना, इफ ऐसे रहे तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. So n is in the denominator. So always remember denominator should not be equal to 0. Why? Because it is meaningless. We can't divide any number by 0. हम 0 से डिवीजन नहीं कर सकते. See, suppose 2 upon 0, it is meaningless. We can't divide any number by 0. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना. 0 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, बट वी आंसर 0 आएगा. 0 डिवाइडेड बाय 1000, स्टिल वी गेट 0. 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, वी गेट आंसर 0. न्यूमरेटर में 0 रहेगा, वी गेट द आंसर 0. बट डिनोमिनेटर में 0 होगा, इट इज द मीनिंगलेस, कांट डिफाइंड ही नहीं कर सकते हम. तो यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है. एनी नंबर, सी व्हाट इज द रैशनल नंबर डेफिनेशन? अ नंबर विच कैन बी रिटन और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n. किसी भी नंबर को अगर हम m अपॉन n ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड एज ए रैशनल नंबर. एंड व्हाट आर m and n? इंटीजर्स. वी नो इंटीजर्स, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, 0 भी. बट वेरी इंपॉर्टेंट, n मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? व्हाट आर रैशनल नंबर? तो आप बोलोगे टीचर आपने इनको बिगर कलेक्शन क्यों किया है? These are not in the numerator or denominator form में. But student, we can write any integer. See 2 means it is not 2. See student, 2. See here, 2 3. It can be written as 2 upon 1. So ये हो गया rational number. -3. If I write 1. So -3 upon 1. So this is a rational number. So every natural, every whole, every integer can be expressed as rational number. उसको rational number में हम convert कर सकते हैं. So all natural, all whole, all integer come in the rational number. And आप बोलोगे जैसे natural number n से divide होता है, whole number w से, integer I, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर कैपिटल R से डिनोट होगा? नो. यस, नो. रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q. आप बोलोगे टीचर Q कैसे? नॉट वाई R. सी R वो रियल नंबर के लिए भी है, आगे आपको है रियल नंबर. तो रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय R. बट रैशनल नंबर, वाई वी यूज Q फॉर रैशनल नंबर? बिकॉज सी रैशनल नंबर मीन्स ऐसे, जैसे 2 upon 3, -4 upon 5, 0 upon 1, 3 upon 5.
So these are the rational number. Means actually it is division. Upon means see it is a division. 2 divided by 3. So in a division आंसर को क्या कहते हैं स्टूडेंट? See when we multiply, जब हम multiply करते हैं we get the product. जब हम addition करते हैं we get a sum. When we subtract we get a difference, है ना? So when we divide the answer is called quotient. The answer is called quotient. So the rational number, that means in that we are dividing, so it is denoted by quotient, for Q for quotient. Is that clear? So these are the number. Negative भी होगा, positive भी, any. Minus 17 upon 3, minus 13 upon 25, all are called as rational numbers. See, again very important student. 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है? 2, देन 3. विच नेचुरल नंबर इज बिटवीन 1 and 2? 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा है? नो, 1 के बाद नेचुरल नंबर डायरेक्ट 2 आता है. देयर इज नो नंबर बिटवीन 1 and 2. इन द सेम वे होल नंबर, देयर इज नो होल नंबर बिटवीन 2 होल नंबर. मीन्स 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आएगा. इन द सेम वे इंटीजर, 3 और 4 के बीच में इंटीजर, नो, 3 के बाद डायरेक्ट 4 ही आता है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही आएगा. बट ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर. अगर 2 रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में अनकाउंटेबल इनफाइनाइट रैशनल नंबर है. यस, नेचुरल नंबर के बीच में तो कोई नंबर नहीं है. 2 नेचुरल नंबर, कॉन्जिगेटिव मीन्स 1 आफ्टर द अदर. 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, 3 के बाद डायरेक्ट 4, 4 के बाद डायरेक्ट 5. बट नॉट इन द रैशनल नंबर. देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर. सपोज here 2 and 3. See 2, 3 again are rational number because they can be written as 2 upon 1, 3 upon 1. So suppose if these 2 and 3 are rational, so in between infinite rational number. Always remember. See, between two rational number, there are infinite rational number. See कैसे होगा? See, जो 2.1 होता है ना, 2 और 3 के बीच में ही आता है. Now 2.12 अगेन यहाँ पे आएगा, 2.123 यहाँ पे ही आएगा, 2.1234 यहाँ पे आएगा. तो many आ सकते हैं, अनकाउंटेबल. समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑल दीज आर द डेसिमल, ये डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर का, तो ये सब इसमें आ जाते हैं. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ऐसे पॉइंट में नहीं होते, वो सिंगल नंबर होते हैं. बट रैशनल नंबर डिवीजन होता है. तो डिवीजन में तो आगे आपको है डेसिमल. दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल पॉइंट. आपने देखा है 7th में डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल एक्सपांशन आप लोगे ना तो मेनी नंबर्स आएंगे. बिटवीन 2 रैशनल नंबर इनफाइनाइट, हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक ना. 1 2 ईच टाइम 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे और 1 2 3 मेनी. इज दैट क्लियर? सो ओके स्टूडेंट, नाउ टेल मी टिल नाउ व्हाट यू हैव स्टडी और व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड टिल नाउ. अब तक आपने क्या सीखा? This is the recall of last year. Natural numbers, whole numbers, integers. Integers include both positive and negative. Now, one bigger collection, one bigger number system, rational number. A number which can be written in the form of m upon n, where m and n both are what? Integers. m upon n. These are integers. Means positive भी हो गया, negative भी होगा. Is that clear? See, minus 65 upon 3, 0. See again rational. क्योंकि all it can be written as 0 upon 1. तो rational हो गया. Okay?
1, 2, all. See, all natural, all whole, all integers, ये रैशनल है. all, क्योंकि all हम upon 1 लिख सकते हैं. Is that clear? Now again 17 upon 5 minus 5 upon 19, etc. These are negative, these are positive. See student, negative sign if in numerator हो या denominator हो, it can be written as center में भी लिख सकते हैं आप 6 upon 3 और 6 upon minus 3. सिर्फ वन नेगेटिव साइन, तो वो आप न्यूमरेटर में भी दे सकते हो, सेंटर में भी दे सकते हो और डिनोमिनेटर में. ओनली वन नेगेटिव साइन. इट कैन बी मीन्स नंबर नेगेटिव हो जाएगा इफ द साइन इज टू न्यूमरेटर और साइन इज टू डिनोमिनेटर और साइन इज टू द मिडल, दैट मीन्स द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर. वन नेगेटिव साइन है वो, चाहे वो कहीं भी हो, न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो या सेंटर में हो, ऑल हैविंग सेम मीनिंग, दैट द नंबर इज नेगेटिव. पॉजिटिव के साइन नहीं होता है ना. इफ बोथ आर नेगेटिव, अगर ऐसे होगा देन सिंपल, इफ टू नेगेटिव दे गेट कैंसल, इट बिकम ओनली 6 upon 8. That clear? One negative means number negative. If both are negative, simply cancel the negative sign. Is that clear? Okay. Now, see student, again अब आपको देखना है हाउ टू रिप्रेजेंट दिस रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, सी अगेन आई एम मेनी टाइम मैं रिपीटिंग करी स्टूडेंट, एनी नंबर और विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ m upon n. ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, वेयर mn what integers and what is the condition, n should not be equal to 0. n 0 नहीं होना चाहिए. सिंपल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे टीचर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो तो फ्रैक्शन भी होता है. हमने देखा है लास्ट ईयर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन भी होता है. यस स्टूडेंट, रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी है, बट सी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है बिटवीन रैशनल नंबर और फ्रैक्शन. फ्रैक्शन उसमें भी होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर में भी होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट फ्रैक्शंस हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट. मीन्स ऑल पॉजिटिव. फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है. -3 upon 5 नो. फ्रैक्शन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव फ्रैक्शन में, बट रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. ये स्मॉल डिफरेंस है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में. फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, एवरी फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, बट रैशनल नंबर एवरी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होगा. सी 2 upon 3 ये फ्रैक्शन है क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव. फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है, बिकॉज पॉजिटिव. रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं और फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव आता है. बट -2 upon 3, is it a fraction? No, it is not a fraction, but it is a rational number. ये फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है. आपको नहीं है, बट आपको समझने के लिए कि क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में भी होता है, तो हम इसको रैशनल नंबर क्यों कहते हैं? Why we not call them fraction? Because fractions means only positive integer, but in rational number m and n are इंटीजर्स, ऑल इंटीजर. पॉजिटिव भी चलेगा, निगेटिव भी चलेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, डिनोमिनेटर. n मीन्स डिनोमिनेटर. इट इज अ न्यूमरेटर, इट इज अ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जिसके ऊपर आपको एक्सरसाइज भी करनी है प्रैक्टिस से. That is how to represent or how to show a rational number on a number line. We will see in the next lecture.